So good morning, students. Continuing with yesterday's presentation, day before yesterday's presentation, we were discussing clinical pharmacy, right? So we have discussed the concept of clinical pharmacy, then the functions of clinical pharmacy, then the elements of clinical pharmacy, and we were discussing, I think, so we have already started with responsibilities of clinical pharmacies. Okay, so I don't remember till what responsibilities we were have completed. I think so 3 responsibilities we have completed. So once again, just in fast, I'll explain. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you. The first and the foremost responsibility was to participate in drug use decision making process. So clinical pharmacist may compile and evaluate patient specific information and help or assist the physician in selecting appropriate drug product, dosage form and formulation. Then he can help in recommending or scheduling the measurements of drug concentrations in biological fluid. Since he is there along with the physician, so he can recommend or reschedule the measurements of the drug concentration in biological fluids by suggesting the patient for the biochemical test if required. Then the third responsibility is to select the drug product source of supply based on comparative evaluation on again the bioequivalence, bioavailability, blood level achieved, and hence time, intensity, and duration of drug action. So another major responsibility of clinical pharmacist is to select the drug product source, okay, from where the drug has to be procured. So he may also judge the quality of the product and select the manufacturers based on economic and cost consideration apart from the quality parameters, right? So primary would always be quality parameter as far as the drug selection is concerned, but along with the quality parameter, the economy and cost consideration should be considered as far as the patient's economy is concerned. Therefore, we called it as pharma economics. So that is what is the cost and economic consideration of the product that is selected for the therapy. Then fourth is determine the dose and dosage schedules based on individual pharmacokinetic considerations and patient's pathological state. Okay. So again, this becomes the responsibility of clinical pharmacist to determine what would be the dose and what would be the dosage schedule. Okay. You may think that this parameter, though it's not too much workable in India, but still that could be a future of a pharmacist, that is clinical pharmacist. So he is responsible in determining the dose and dosage schedule. क्या डोज होना चाहिए और कैसा डोसेज शेड्यूल होना चाहिए. ठीक है, डोज मतलब कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट ड्रग, और डोसेज शेड्यूल मतलब कौन से समय पर कौन से टाइम पर. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डोज एंड डोसेज शेड्यूल. सो दैट वुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट की जो पैथोलॉजिकल स्टेट है, पेशेंट की जो फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस है, उसके बेसिस पर the pharmacist will decide the dose and the dosage schedule. ठीक है, he may also assess the existing dosage schedule and recommend any modification if there. ठीक है, so कोई अगर थेरेपी चल रही है, कोई डोसेज ऑलरेडी शेड्यूल इज देयर फॉर अ पेशेंट, and if the clinical pharmacist studies it and he thinks that there should be some modification, so he can recommend the modification, of course in consultation with the physician. Then fifth is he can prepare medication of patient use and provide drug product ready for administration to various patient care units. So again, this is a very rare part because manufacturing or preparation of medication is rarely seen, but now this is in concern with administration. जो nurses काम करती है उससे ज्यादा मतलब preparation of the dose, I can say किसी डोज का प्रिपरेशन करना मतलब तैयार करना. say for example, if liquid preparation is there and it is 30-40 ml there and 5 ml has to be given, so he has to make it ready for the administration, right? So that is that can be the another function of a clinical pharmacist who is working as a full-time clinical pharmacist. Then next important we have been discussing is counsel the patient to ensure that they understand the importance, benefit,
risk of the therapeutic plan implemented. So counseling, patient counseling is another important part as far as the clinical pharmacist is concerned. But largely he should ensure, clinical pharmacist ने ensure करना चाहिए कि patient is understanding the importance of therapy, benefits of the therapy and also risk of the therapeutic plan that could be implemented. मतलब कुछ जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि कुछ ड्रग इंटरेक्शन है, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, so that should be known to the patient. So patient compliance and adherence would be good. So it is always seen that whenever there is a patient counseling done either by a physician or a pharmacist in the hospital setting, the patient compliance and adherence to the therapy is good, right? So he provides the drug information and encourages the compliance as far as the patient is concerned. Then monitor the patient for detecting adverse drug reaction, drug interaction, drug abuse and toxicity. So another important role we have seen that monitoring the patient को monitor करना है. किस लिए monitor करना है? कोई adverse drug reaction दिखता है, कोई drug interaction दिखता है, कोई drug abuse दिखता है या कोई toxicity associated with the therapy is seen, and that would be then recommended to the physician and would be corrected in consideration with the physician and the pharmacist. Then eighth is designing patient specific drug dosage regime. Okay, so as we have been again discussing it that a therapy same disease with different patient might require a different dosage regime, right? So therefore this is the role of pharmacist depending upon the patient's age, patient's gender and other complications associated with the patient. He has to design a patient specific drug dosage regime. ठीक है, so पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक डोजेज रेजिम तैयार करना, ये would be one of the responsibility of clinical pharmacist. Then not only designing and developing the drug dosage regime but also monitoring and adjusting it according to the need. ठीक है, so ये दोनों फंक्शन बनते हैं. एक है कि डिजाइन करना है, क्या हमको पता करना है कि क्या उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या डोसेज रेजिम रहेगा, कैसा डोसेज फॉर्म रहेगा और कौन से टाइम पर कौन सी दवाई दी जाएगी. दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग. सेकंड, अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी मॉनिटरिंग द डोसेज रेजिम दैट हैज बीन डिजाइन. जो फार्मासिस्ट ने डोसेज रेजिम बनाया वो डोसेज रेजिम को मॉनिटर करना, एंड if he finds that there should be some adjustment in the dosage regime, that could be done, because that would be helpful for the same patient and that would be also helpful for the other patient that would be coming after this for a particular disease. Then next responsibility is evaluating unusual patient responses to drug therapy for possible pharmacokinetic and pharmacologic explanations. Okay. So there might be some unusual patient responses. Again, depending upon the patient and patient's mentality, there can be some unusual patient responses. ठीक है, patient डर जाता है या patient को कुछ different type के जो शायद कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखे या फिर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखा है वो नहीं होते हुए कुछ और अनयूजुअल रिस्पॉन्सेस पेशेंट दे रहा है. सो दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड एंड इवेल्युएटेड. again that should be evaluated on the basis of pharmacokinetic and pharmacologic explanation. It should not be random. ठीक है, so pharmacist should try to know what is the possible pharmacokinetic and pharmacologic explanation behind the unusual patient response. So that might be some fear. पेशेंट के साथ बात करके पता चलेगा कि जो अनयूजुअल रिस्पॉन्स पेशेंट को आ रहा है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द फियर विद द पेशेंट और बिकॉज ऑफ एनी ड्रग food interaction that the patient has taken. So that would be the part of the clinical pharmacist, but again it should not be done on random basis. ठीक है, उसका कुछ तो भी scientific एक्सप्लेनेशन होना चाहिए या तैयार मतलब पेशेंट मतलब फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू कम आउट विथ सम explanation that could be pharmacokinetic, pharmacologic or some scientific explanation behind this unusual response of the patient. Then next is communicating patient specific drug therapy information to physician, nurses and other clinical practitioners and to patients orally or in writing, and including documentation of this in patient's health
record. Right? So the patient specific drug therapy जो हमने बनाई है, जिसको हम मॉनिटर करने वाले या फार्मासिस्ट मॉनिटर करने वाला है, ये जो पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी बनाई है, that has to be communicated to the physician, that has to be communicated to the nurses and other clinical practitioners who are there taking care of the patient. Along with the practitioners and healthcare professionals, this patient specific theory should also be explained to patient, either orally or written, whatever is feasible and whatever the setting tells. ठीक है, वो जो पर्टिकुलर सेटिंग है जहां पर ये इंफॉर्मेशन हमको सर्कुलेट करना है, सो दैट कुड बी ओरली if the pharmacist thinks that patient is okay of understanding, so it could be orally or it could be in written form, so that the patient does not what you can say so that the patient remembers his dosage therapy throughout the therapy, including the documentation of this in the patient health card. So you might have seen that the patient who are admitted in the hospital, at the bedside they have a particular record, health record of the patient written on, generally on a notepad it is written. So in that clinical pharmacist has to record the therapy and the communication that is done with the physician. Then next is educating pharmacists, physicians, nurses, and other clinical practitioners about pharmacokinetic principles, appropriate indications for clinical pharmacokinetic monitoring, including cost-effective use of drug concentration measurement. So we have seen one of the function of clinical pharmacist as education and training, right? So this is one of the responsibility of clinical pharmacist to educate the pharmacist जो hospital pharmacist है, physicians who are there, then nurses and other clinical practitioners about the pharmacokinetic principles of the drug or the dosage regime and appropriate indication of a particular क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉनिटरिंग जो करेगा, उसका जो अप्रोप्रिएट इंडिकेशंस है दैट शुड बी टोल्ड टू द फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस एंड नर्सेस, including the cost effective uses of drug concentration measurement. So if there always we have been talking that it should be cost effective. Every therapy that is being suggested by physician or the pharmacist should be cost effective as far as patient is concerned. Then next is developing quality assurance program for documenting improved patient outcome and economic बेनिफिट. सो ये सारा काम जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर रहा है या करने वाला है, ठीक है, सो दैट होल वर्क शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट देयर वुड बी द एविडेंसेस दैट monitoring the patient therapy properly and documenting it results in a proper outcome and it gives a economic benefit. Okay, so therefore he has to develop a quality assurance program for this purpose, so that whatever measures are taken, the output of the measure is of a economic benefit as well as the benefit for the patient care. So इसके लिए कोई क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जा सकता है कि क्योंकि हम ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस फार्मासिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से बेनिफिट दिख रहा है पेशेंट को, तो उसके बाद उसी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो होगा सो दैट बेनिफिट इज सीन to the patient as well as there is an economic benefit. Then next is promoting collaborative relationship with other individuals and departments involved in drug therapy. So drug therapy में जो भी departmental लोग involved है, say physicians, interns, nurses and other ward boys should be have a good collaboration or good relation that we have been seen right from hospital pharmacies. जब से हमने देखा है तब से जब तक ये there is a proper correlation and coordination among the healthcare professionals, the therapy would not be effective, right? Because pharmacist is not only the person who is responsible for the therapy, effectiveness of the therapy, okay? Unless and until he is being cooperated by nurses, unless and until he is cooperated by the interns and physicians, the therapy would not be a successful, right? So therefore a collaborative relationship का प्रमोशन होना चाहिए, मतलब फार्मासिस्ट ने एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए सबके साथ, इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस एंड दिस बिकम्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट.
then these were the responsibilities. Apart from this, there are some additional responsibilities, three additional responsibilities that a pharmacist has to carry out. So pharmacist with a specialized education, training and experience may have an opportunity to assume some following additional responsibilities. Now what are additional responsibility? One is designing and conducting research at his own level. Apart from the research that is going on within the hospital by the physician, the pharmacist can design his own research and conduct the research. ठीक है, समझ में आ रहा है? So he can design a research. You can see many paper in publication in journals regarding the particular therapy. ठीक है, observing a particular therapy among the different patients who are admitted within the hospital. Say for example, prescription, writing of the prescription for hypertension, similar type of hypertension patient, and evaluating it. So that could be a research part. ठीक है, कि similar type के डिजीज के लिए इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कौन सी टाइप का ड्रग रेजिम फॉलो होती है. ठीक है, सो दैट कुड बी अ रिसर्च पार्ट. ठीक है, सो दैट कुड बी डन बाय द क्लिनिकल pharmacist, that is designing and conducting research apart from the research that is going on in the hospital. Then another additional responsibility could be developing and applying computer programs and point of care information system to enhance the accuracy and sophistication of pharmacokinetic modeling and applications of pharmaceutical care. Now since computer systems are there, there are lots of softwares that are there in the existence. So the pharmacist can take help of the computer programs and software, so that जितनी भी इंफॉर्मेशन क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में ऐड करेगा, so that it would be helpful for him, patient and physicians and all other healthcare professionals for the pharmaceutical care. And the last could be he can serve as an expert consultant to healthcare professionals with a general background in clinical pharmacokinetic monitoring. Since clinical pharmacist has more experience as far as the drug is concerned, ये तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं. इसके अलावा the therapy part is related, he will have more experience, so therefore he can serve, a good clinical pharmacist can serve as an expert consultant to the healthcare professionals. ठीक है, with a general, of course with a general background of clinical pharmacokinetic monitoring. अगर वो properly monitor करता है और उसके पास एक considerable amount of experience आ जाता है, so he can be a consultant to healthcare professionals for effective drug therapy. So these are the responsibilities of clinical pharmacist. Next topic is medication chart review. Again a very brief topic, that is medication chart review. So three words: medication chart and review. Review is what we something when we are again checking, I can say rechecking. चार्ट, मेडिकेशन चार्ट क्या है? हर पेशेंट के लिए एक चार्ट बनेगा जिसमें डेली डोसेज और डेली जो थेरेपी एडमिनिस्टर हो रही है वो लिखी जाएगी. सो ये जो डेली थेरेपी एडमिनिस्टर हो रही है लिखी जाती है, इसका रिव्यू करना इज नथिंग बट मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. So what is it? What is medication chart review? It is a review of patients' medication charts to identify potential risk associated with patients' medication and clarify information that is not clear or not legitimate. Okay. So what is a review or what is a medication chart review? It is nothing but a review of the patient's medication chart जो रेगुलरली बनता है. जैसा मैंने कहा कि जो इन पेशेंट रहते हैं, you will find that at the bedside of every patient you will find a medication chart. medication chart is nothing but जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कौन सी दवाई कब दी है, उसका टिक मार्क किया जाता है. I'll show you the sample of medication chart in this presentation, right? So ये जो चार्ट डेली बनता है, इस चार्ट को रिव्यू करना. क्यों रिव्यू करना? To identify the potential risk associated with patient's medication. ठीक है, अगर कोई रिस्क वहां पर दिखती है तो उसको आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर चार्ट से, वो रिव्यू करना. ठीक है, एंड क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट क्लियर एंड लेजिटिमेट. मेनी टाइम्स बिकॉज क्या होता है जब चार्ट बनता है तो जनरली दिस चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नर्सेस और फिजिशियन.
ठीक है. So there might be the chances that the physician is on a round, so he might be in, we can say, जल्दी जल्दी में शायद कुछ मिस हो जाए. So जिसका इंटरप्रिटेशन है, जिसका रिव्यू फार्मासिस्ट कर सकता है अंडर this process, that is medication chart review. The review of medication chart may involve references to other sources of information such as IV fluid chart. Right? So in some hospitals, the uh, intravenous fluid chart is prepared separately. Okay. So that chart could also be taken as a reference for reviewing the general medication chart of the patient. So all inpatient medication charts are to be reviewed ideally on daily basis by an appropriate credentialed professional such as a clinical pharmacist. मतलब clinical pharmacist ने daily basis पर inpatient medication chart का review करना चाहिए ideally. ठीक है. So it depends upon the hospital how regularly a clinical pharmacist performs this function. बट आइडियली हर दिन जो भी चार्ट बनता है उस चार्ट का रिव्यू करना चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने. The frequency of chart review needs to be determined by the clinical risk associated with the patient, and a high risk patient require daily chart review. So जो frequency है, जैसा मैंने कहा कि daily होना चाहिए. So there can be such patient who are not very much associated to risk. Right? So probably their review could be done after 2 days or after 3 days or after a particular therapy. ऐसे पेशेंट जिनकी जो ज्यादा रिस्क पर नहीं है, ठीक है, मतलब जिनकी मेडिकेशन, जिनकी कंडीशन इज ठीक, मतलब ओके है, एंड दे आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज थ्रू दी पर्टिकुलर थेरेपी. सो जैसा मैंने कहा कि ये आइडियली डेली बेसिस पर होना चाहिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फार्मासिस्ट एंड ऑफ कोर्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट दैट चार्ट कब रिव्यू करना है. ठीक है, बट it is assumed that high risk patient chart should be reviewed every day. Now objective of the chart review, medication chart review is what? There are two objectives. First objective is of course to optimize the patient's drug therapy. जो ड्रग थेरेपी हमने पेशेंट को दिया है उसको ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है, मतलब उसका जो इफेक्टिवनेस है, जितना इफेक्टिवनेस है उतना इफेक्टिवनेस आना चाहिए और दिखना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिव्यू प्रोसेस. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कोर्स to prevent and minimize the drug related problems and medication error. Right, so these are the two main objectives. So second objective is, पहला objective है कि जो ड्रग थेरेपी आइदर फिजिशियन ने या फार्मासिस्ट ने रिकमेंड की है वो ड्रग थेरेपी का ऑप्टिमाइजेशन हो, मतलब इफेक्टिविटी बढ़े उसका. ठीक है, और सेकंड मेन रीजन है जो जिसके लिए मेडिकल चार्ट रिव्यू किया जाता है, to prevent and minimize the drug related problems or medication error that happens in the prescription or either during actual therapy. ठीक है, सो एक्चुअल थेरेपी के समय जो प्रॉब्लम्स इनकर होते हैं, ठीक है, वो उनको प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना. ठीक है, प्रिवेंट करना मतलब मुझे अगर पता चल रहा है कि ये दो ड्रग साथ में देने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, सो आई विल नॉट रिकमेंड अ थेरेपी. लेकिन अगर कोई ऐसी थेरेपी दी जाती है और कुछ सिम्टम्स मुझे पेशेंट में दिख रहे हैं, so I can minimize the drug related problem or medication error. So these are the two main objectives for performing the review of medication chart. Now the patient, this is the process. The patient medical record should be reviewed in conjunction with the medication administration record. So जो पेशेंट को एडमिट करने का जो रिकॉर्ड है वो और जो मेडिकल रिकॉर्ड है इन दोनों को साथ में चेक करना है. बेसिकली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड विल हैव द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, राइट, प्रीवियस हिस्ट्री. सो दैट माइट आल्सो बी हेल्पफुल व्हाइल टेकिंग अ रिव्यू ऑफ द पेशेंट medication or therapy. Recent consultations, treatment plans, daily progress should be taken into account when determining appropriateness of current medication order and planning each patient's care. So कुछ recent consultations अगर उस particular patient के है, कुछ treatment plans है, कुछ daily जो daily progress है उस patient का, that should be taken into account
while determining the appropriateness of the current medical order. मेडिकेशन ऑर्डर मतलब जो करंट प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकेशन ऑर्डर ये वर्ड जनरली प्रिस्क्रिप्शन करके यूज होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, बिकॉज इट इज अ ऑर्डर गिवन बाय द फिजिशियन और अ फार्मासिस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन ऑर्डर. सो जो करंट मेडिकेशन ऑर्डर है, जो उसका अप्रोप्रिएटनेस मुझे डिसाइड करना है, दैट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रीसेंट कंसल्टेशंस, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स और द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट ऑन द डेली बेसिस. All current and recent medication orders should be reviewed every time. So it is said that every day on daily basis the review should be done. Now components of medication order review, what are the components, क्या क्या include होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो include होनी चाहिए medication order review के लिए. So the first thing is checking that medication order is written in accordance with legal and local requirement. So first component or first part of this review process is, सबसे पहले क्या चेक करना है, to check that the medication order जो prescription लिखा गया है, sorry, वो प्रिस्क्रिप्शन इज इन अकॉर्डेंस विथ लीगल एंड लोकल रिक्वायरमेंट. लीगल रिक्वायरमेंट मतलब जो ड्रग प्रिस्क्राइब किए गए हैं, दे आर एथिकल एंड दे आर okay with whatever indications are there. And local requirement is what, a particular hospital will have certain policies as far as writing the order or the prescription is concerned. So वो local requirement और legal requirement satisfy हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे पहला काम है under the review. Second is ensuring that the medication order is comprehensive and unambiguous, that appropriate terminology is used and that drug name are not abbreviated. Annotate the chart to provide clarification as required. ठीक है, अगर कुछ requirement, अगर उसमें कुछ terminologies ऐसी है, कुछ abbreviations लिखे, so that could be cleared as far as the फार्मासिस्ट इज कंसर्न वाइल रिव्यूइंग. ठीक है, सो ये सेकंड काम है कि फार्मासिस्ट हैज टू एंश्योर दैट जो मेडिकेशन ऑर्डर है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और अनएम्बिग्यूअस है. मतलब उसमें जो हम बार बार बोलते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी बायस, अनएम्बिग्यूअस, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, शुड बी, एंड देयर शुड नॉट बी एनी एब्रीवेशन यूज जनरली, बिकॉज might the abbreviation might not be understandable by the nursing staff or the person who is responsible for actual administration of the drug. ऐसा कुछ होता है तो that should be clarified by the pharmacist in consultation with physician or by himself if he is well acquainted with the terminologies. Third is detecting orders for medication to which the patient may be hypertensive, hypersensitive or intolerant. Okay. Detecting orders for medication to which patient may be hypersensitive and intolerant. इसका मतलब क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, उस प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिकेशन लिखा गया है, फार्मासिस्ट को वो चेक करना है कि ये मेडिकेशन जो 4-5 मेडिकेशन लिखा है उसमें से कोई ऐसा मेडिसिन है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, पेशेंट इज इनटॉलरेंट, राइट. So many times it is being asked whenever the patient is admitted to hospital, he is being asked or his relatives are being asked about the hypersensitivity about the drug, about any particular drug, so that might not interfere in the drug therapy or that might not cause some adverse effect. Hypersensitivity रहेगी मतलब it will show some adverse effect for a particular patient, right. Then fourth is ensuring that the medication order is appropriate with respect to first patient's previous medication order, second patient specific consideration like disease state or pregnancy or what is this consideration patient specific condition. Then third is drug dose and dosage schedule, especially with respect to age, renal function and liver function. Then route, dosage form and method of administration. So these are the four things that should be ensured. So ensuring that the medication order is appropriate with respect to जो medication order है वो सही है with respect to क्या, patient's previous medication order अगर है तो मतलब पुराना prescription अगर है तो उस accordance से ये नया order है या नहीं है.
ठीक है, पेशेंट की जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसको देखते हुए ये मेडिकेशन ऑर्डर प्रॉपर है या नहीं है, उसमें जो ड्रग डोज है और डोसेज शेड्यूल है that are in accordance with the age of the patient, if the patient is having any renal function, renal problem or the liver problem, so that would be again interfering in the therapy, so that should be checked by or ensured by the clinical pharmacist. अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा डोसेज फॉर्म है और क्या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट शुड आल्सो बी एंश्योर्ड बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट. देन नेक्स्ट इज चेकिंग कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल फॉर मेडिकेशन डुप्लीकेशन, इंटरेक्शन एंड इनकॉम्पेटेबिलिटीज. सो जो पूरा ड्रग प्रोफाइल है दैट शुड बी चेक्ड, ठीक है, बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट. दैट विल टेल वेदर देयर इज अ मेडिकेशन डुप्लीकेशन देयर, मतलब कोई सिमिलर टाइप का मेडिकेशन दिया गया है या नहीं. इट हैपेंस मेनी टाइम्स दैट कि सम medication might be duplicated, right, in the form that nowadays we have a combination of medication, right. So there might be some जो मैं बार बार example देता हूँ, there might be some antacid associated with some combination of drug, and apart from that the physician has written some other antacid, right. So यहाँ पर duplication हुआ कि एक combination में भी antacid है और ये, so that type अगर ऐसा कुछ है तो that should be detected. Some interaction should be detected and the incompatibilities if the clinical pharmacist finds in the complete drug profile. Then sixth is ensuring that the administration time are appropriate. जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद निग्लेक्ट होता है बहुत सारे पेशेंट में कि मेडिसिन कब लेना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फूड और विथ रिस्पेक्ट टू अदर ड्रग्स और द प्रोसीजर्स ऑफ टेकिंग द एक्चुअल मेडिसिन, ठीक है, कब लेना है, खाने के पहले, राइट. इट इज मतलब अभी भी ये कंफ्यूजन है ऑलवेज के मेडिसिन, इट इज बीइंग टोल्ड दैट दिस मेडिसिन हैज टू बी टेकन बिफोर लंच, ठीक है. नाउ बिफोर लंच मीन्स व्हाट, ठीक है, it is not understandable or rather it is very vague sentence, right. So I understand that before lunch means at least 15 minutes before lunch, okay, but many patients I have seen that before lunch means दवाई लेने की, पानी लेने का और खाने के लिए बैठने का, right. So this is very important as far as the what you can say drug has to be taken empty stomach because food interaction है, इसीलिए खाने के पहले लेना है, right. So there might be number of reasons for the same. Mean to say is we have to ensure the proper administration time for every patient, ठीक है. So whatever the time is there for a specific medication. Then seventh is checking the medication administration record to ensure that all orders have been administered, ठीक है. So पहला है कि हमको ensure करना है कि कौन से समय पर कौन सी दवाई लेनी है. सेकंड नेक्स्ट है कि हमको चेक करना है वेदर वो समय पर वो दवाई ली गई है या नहीं. सो सेवेंथ पॉइंट सेज दैट चेकिंग ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मेडिकेशन देने के बाद कि वो सही समय पर जो जैसा ऑर्डर में लिखा है वैसा एडमिनिस्टर हुआ या नहीं. Then eighth is ensuring that the drug administration order clearly indicates the time at which drug administration is to commence, ठीक है. सो जो मेडिकेशन ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें सही समय लिखा है या नहीं है ये भी चेक करना है, ठीक है. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सुबह दोपहर शाम, अगेन अ वेरी वेग स्टेटमेंट, ऐसा मैक्सिमम टाइम लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन में, हैज टू बी टेकन इन मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. सो दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है, फॉर मी मॉर्निंग माइट बी 8 o'clock and for some other in you sitting there 56 students, the morning might be at 6 o'clock, morning might be at 10 o'clock, right. Nowadays it might be at 9 o'clock, right. So it depends upon so that should be specified. Mean to say मेरा मतलब बोलने का है कि ये specificity होनी चाहिए, it should be clearly indicating the time at which the drug should be administered, actually administered. Then ninth is any special consideration that required should be given specially in short course therapy as in antibiotic and analgesics. कुछ short therapy होती है उसमें कोई special consideration अगर है और वो लिखा है या नहीं लिखा है, that has to be reviewed.
ensuring that the order is cancelled in all sections of medication administration record when the drug therapy is intended to cease. इसका मतलब यह है कि कोई मेडिकेशन थेरेपी किसी पेशेंट की बंद कर दी है, सो पेशेंट फार्मासिस्ट को ये इंश्योर करना है कि ये जो बंद की हुई मेडिसिन या बंद किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज बीइंग कैंसल्ड एट ऑल लेवल्स. ठीक है, सो जितने भी सेक्शन जहां जहां में रिकॉर्ड करना पड़ता है हर जगह ये कैंसल किया गया है. ये काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने करना चाहिए. Then 11th is if appropriate follow-up of any non-formulary drug orders, recommending a formulary equivalent is required. This means to say that कि हर हॉस्पिटल में हमने देखा है कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, ड्रग फॉर्मुलरी होती है. ऐसा कोई एक आधा ड्रग है जो फॉर्मुलरी में नहीं है और वो लिखा गया है. सो फार्मासिस्ट का काम है कि उसका कोई इक्विवेलेंट अगर फॉर्मुलरी में है तो रिकमेंड करने का. ठीक है, सो इफ any drug which is not a part of formulary, but if there is certain other medication which is there which is equivalent to the first drug, that could be recommended as a part of review process. Then 12th is ensuring appropriate therapy monitoring is implemented. Ensuring that कि मॉनिटरिंग थेरेपी मॉनिटरिंग इज गोइंग ऑन, थेरेपी मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट शुड बी एंश्योर्ड. ऑफ कोर्स दैट इज बीइंग डन बाय फार्मासिस्ट, बट दैट शुड बी एंश्योर्ड बाय हिमसेल्फ ओनली, दैट कि ये मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा. एंश्योरिंग दैट ऑल नेसेसरी मेडिकेशन इज ऑर्डर्ड प्रॉपर्ली. ठीक है, मतलब कोई प्री मेडिकेशन है, कोई प्रोफाइलेक्सिक है, सो वॉट एवर इज द फंक्शन ऑफ दैट मेडिकेशन दैट हैज टू बी एंश्योर्ड. रिव्यूइंग मेडिकेशन फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अनदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहना चाहिए. सो रिव्यू करते समय ये भी रिव्यू करना चाहिए कि जो मेडिकेशन दिया गया है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द पेशेंट. देन 15th इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम इज वो जो मेडिकेशन चार्ट है और उसको जो हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, सो दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, such as untreated indications, inappropriate drug selection, adverse drug reaction, failure to receive drug interaction, drug use without indication, and overdoses. So these are the identification of drug related problems, so that has to be monitored, that has to be identified and written down as a review process. So these are the components of review process. Another important goal of treatment chart review is to minimize the risk of medication error that might occur at the level of prescribing or at the level of administration. ठीक है, so दो जगह मेडिकेशन एरर हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय और एडमिनिस्ट्रेशन करते समय. सो जब हम चार्ट का रिव्यू करते हैं तो ये दो चीजें भी हमको इंपॉर्टेंटली रिव्यू करना है. The medication, this is what is the medication error, is nothing but any preventable error that may lead to inappropriate medication use or the patient harm. So that our aim is to remove this medication error. To prevent potential morbidity and mortality associated with this error, pharmacists should systematically review the medication chart and write annotations on chart where the medication orders are not clear. ठीक है, जहां जहां मेडिकेशन ऑर्डर क्लियर नहीं है वो हमने देख लिया है कि एक स्टेप में कि वो हमको वहां पर लिखना है. एज अ फार्मासिस्ट हमको मेडिकेशन चार्ट को रिव्यू करना है और जहां जहां कुछ क्लियर नहीं है ऐसे एनोटेशंस हमको वहां पर क्लियरली लिखना है और मेंशन करना है. ठीक है, so this is a sample medication chart, right? It will vary from hospital to hospital. I have got it somewhere from QRJM hospital, right? So you can see ये particular therapy का chart है. This is chart, this is not review. Okay, we are talking about medication chart review. ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेडिकेशन चार्ट रिव्यू की. ये है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू का सैंपल. यू कैन सी दैट कि ये प्रिस्क्रिप्शन है अगर आप मेडिकेशन में देख रहे हो किसी पर्टिकुलर पेशेंट का, और दीज आर दी डेज एंड टाइमिंग, कौन से समय पर कौन सी दवाई दी गई है और उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है तो यहाँ पर लिखा जाता है. दिस इज व्हाट इज द मेडिकेशन चार्ट. जनरली टिक मार्क किया जाता है. 99% क्या है कि यहाँ पर जैसे ये ओराप्रेड है, यहाँ पर कितने बजे दिया गया है मंडे को, वो टाइम लिख के टिक मार्क किया जाएगा जो चार्ट कहता है. ठीक है,
This is one chart. This is another daily medication schedule chart that is that is I have found from internet from some hospital. ठीक है, so ये vary होगा hospital to hospital. Now this is the review chart generally prepared by the pharmacist. ठीक है, ये मेडिकेशन रिव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ जो रिव्यू है मुझे लिखना है. सो नेम ऑफ द मेडिकेशन, किसने प्रिस्क्राइब किया था, उसका डोज क्या था, व्हेन डू यू टेक इट, कब लिया था, कितने समय लिया था, उसका कुछ पर्पस किस लिए लिया था. इंपॉर्टेंट कमेंट इफ देयर दैट, अब यहाँ पर एक कमेंट है, एग्जाम्पल था वहीं पर लिखा कि मेक्स मी हेजी. ठीक है, सो स्टॉप डेट अगर है तो, और मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा है कि ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड आफ्टर 4 वीक्स. सो हियर देयर वाज अ सजेशन, अपडेटेड रिव्यू वाज देयर कि द डोज हैज टू बी चेंज टू 10 milligram, right? Depending upon the condition of the patient. So this is the review chart, right? So ये फिर से ये जो सैंपल मैंने लिया है ये पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल का है. सो दिस रिव्यू document can change from hospital to hospital depending upon the hospital administration, right? So we have completed with the medical chart review. Next is